In Indian geography, I will start here with the physical. Start with the introduction of Indian geography. As you people know that India is extended from the Jammu and Kashmir in the north, from the Kanyakumari in the south, when we consider the mainland. When we consider our island, the India is extended to the Indira Point, which has been now disappeared during the tsunami, but we consider it that is the southernmost point of India. So the India, when you consider our island, the Indira Point or Pygmalion Point is the part of the Andaman and Nicobar group of island, and that is the southernmost point. So India is extended from Jammu and Kashmir to the Indira Point or Pygmalion Point in the south. This is the north-south extension of India. When we consider the west and east uh, longitudinal extension of India, then India is extended from Gujarat to the Arunachal Pradesh. And this total land area which is occupied right from the Jammu to the Kanyakumari and from the Gujarat to Arunachal Pradesh is 32 lakhs 87,263 square kilometer areas. So India is a very vast land in the South Asia region, and India's peninsula is jet into the Indian Ocean. So when you look at the map of India, the Indian peninsula is jet into the Indian Ocean and divide the Indian Ocean into two parts, the Bay of Bengal and the Arabian Sea. So because of this peninsular India, or this is the peninsular part of India, the Indian Ocean is divided into two parts, the Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. And what is the unique thing along with the India here? That only ocean in the world is named over a country, that is India, and which is the Indian Ocean. An Indian Ocean which lies here is the third largest ocean of the world. I had already discussed in the oceanography about the Pacific, Atlantic, Indian Ocean and the Arctic. So Indian Ocean is the third largest ocean, and this ocean is the significant for India. This is very important for us. And altogether along this Indian Ocean, there are 46 countries, including India. India is one of them according to United Nations organizations. Okay. So when you look at, as I have said, along the Indian Ocean, there are some countries in the western side of Africa, because in the west there is the African continent. So in the African continent there are certain countries which make border with the Indian Ocean. Then when we look at the Middle East or the West Asias, there are certain countries which border with the Indian Ocean. In the South Asia, there are certain countries which bordered with the Indian Ocean, including the Indonesian island and Australia in the east. Okay, so there are altogether 46 countries, out of which there are so many littoral countries, few island countries are also there. So altogether, as I have said, and India is one among them. But when you look at India is one of the largest country here, size wise, vastness wise. Okay. And that's why the position of India is unique in the Indian Ocean. And what is again the very important and crucial point here is, when you look at Indian Ocean, it is not like Atlantic and Pacific connected with the Arctic Ocean. The Atlantic and Pacific connected in the north to the Arctic Ocean. But India here is blocked by the land. Indian Ocean is blocked by the land in the north. So it is not connected with the Arctic. And this is the landlocked nature of the Indian Ocean. And because of this very landlocked nature of the Indian Ocean, the climate of this region is quite unique. And that climate is called monsoonal climate. So India receives the rainfall from the monsoonal climate. And the monsoon is a very unique climatic conditions. Why? Because here in this zone, what you find, reversal in the direction of the wind. What we observe, the seasonal reversal of wind.
which is the unique condition present in the Indian Ocean region. Why? Because in the north of Indian Ocean, the land which is blocked this ocean. And that's why we find here a very unique climatic condition. We call that monsoon type of climate. Further in climate, I will discuss the monsoon type of climate in details and their characteristics feature. But what you have to remember right now that India receives majority of the rains because of this climate, which we call monsoon climate. Am I clear? So now when you look at India, which is located here in the Indian Ocean region, is the seventh largest country of the world area wise when we talk about. Population wise, now as you know, India surpassed the China. Now the census is going on, so we will receive the data later on. So India, when you consider according to the last census 2011, India was the second largest populated country of the world. So area wise, it is quite vast, seventh largest country. After when you consider Russia or Canada or US or Brazil or China or Australia, okay, apart from that, all these countries, the India is the seventh largest. So the India having the vast land area, which gives him a unique dominant position in the South Asia. Now in the books, we always learn that the term which is written there is Indian subcontinent. Why the term Indian subcontinent is written? Because the India having all the characteristics feature of a continent. It has the diversity, the not only the cultural but also the wildlife diversity, okay, the vegetation diversity, the diversity of the minerals, the diversity of the climate, the diversity of ethnicity, the diversity of the races. So you observe the unique positions here, and that's why we called it Indian subcontinent. It has all the feature of a continent. Okay, and when we use the term Indian subcontinent, what countries, including India, is considered in that? The Pakistan, the Afghanistan, the Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, all are the part of Indian subcontinent when we consider this term. Okay, so now, and India share a vast land border with the western part of the Asia. Okay, when you look at in the South Asian countries, when you consider the India share the land border in the west to the Pakistan and Afghanistan. In the north, it share the border with the China as well as the Nepal and Bhutan. In the northeast region, it shares the boundary with the Myanmar. Very close is Malaysia and Indonesia when you consider the Indian Ocean region. Okay, so India shares a maritime border, that is the ocean border with several countries like Maldives, Sri Lanka. When you look at, we share the maritime border, and the land border we share with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, etc. Am I clear? As well as Bangladesh also. Now India also having the 12 nautical mile areas in the Indian Ocean. According to UNCLOS, United Nations Law of the Sea, I had discussed in oceanography. So India also having 12 nautical mile zone. Okay. So as I have said with you people that 12 nautical miles zone is about 21.9 kilometer areas where India having rights in the Indian Ocean regions. And we have, as you know, 200 nautical mile when you move ahead, that is the exclusive economic zone, that is called EEZ. So India having the right to explore the marine resources until 200 nautical mile in the Indian Ocean region, that is the Arabian Sea as well as Bay of Bengal.
So what is the advantage of India? That India having also the maritime resources access. So this ocean is not the arteries of transport only. These oceans are not the arteries of transport only, not help in the maritime transport, but this ocean are the vast resource reason, and that help in the prosperity of India. The economic driver is also the marine resources. So this Indian Ocean is again very significant for India, as I have seen, not only for the security and strategic point of view, but also for economic point of view. The Indian Ocean region is very important. So India's location here in the Indian Ocean region is quite strategic. So let's understand some facts first, and then I will move to the conceptual part. So what is the facts for you people is here. What is the fact? Fact is, when you look at the area of India, 3287,263 square kilometer, and India is the seventh largest country in the world, as I have discussed with you people. Okay. Now, so when you consider it occupies 0.57% of the entire Earth areas and 2.4% of the area of the total land parts. Because as you people know, over the globe, over the Earth, okay, 71% part is occupied by the ocean almost, and 29% part is occupied by the land. Out of land, India's area is 2.4% of the total land area, and over the globe, India occupy 0.57% of the areas. Now, when you look at the latitudinal extent from the Kanyakumari to the Jammu Kashmir, the latitude which passes from the Kanyakumari is 8 degree 4 minute north, and the latitude which passes from the Jammu Kashmir Indra Call is 37 degree 6 minute north. When you talk about the longitude which passes from the Gujarat is 68.7 degree east, and from the Arunachal Pradesh 97 degree 25 minute east. So India is lying east to the GMT, the Greenwich Mean Time, which is called the prime meridian. So India is lying in the east, and India is lying in the northern hemisphere, not to the equator. So India's mainland, that is Kanyakumari, start from 8 degree 4 minute, and India's ended at the Indira Call in the Jammu Kashmir at this latitude 37 degree 6. So if you look at this latitudinal differences is almost around 30 degree, and when you look at this longitudinal differences is also around 30 degree. This is a very unique conditions. And when you look at the India's structure, India is now inverted triangular structure. India is looks like that. So India's structure is inverted triangular structure. Inverted triangular structure. Inverted triangular structure. So what I have mentioned at latitudinal and longitudinal differences, if you calculate, it is about 30 degree. So when you calculate this differences, this is longitudinal, and this differences, this is latitudinal, it is about 30 degree. What is the uniqueness is that when you cross the 22 degree latitude, when you cross 22 degree north latitude, and when you move towards south, the India is tapered, India is narrow. Beyond this 22 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उससे नॉर्थ में जाओगे तो इंडिया इज वाइडर फ्रॉम गुजरात टू this Arunachal Pradesh, India is quite wide. But when you cross 22 degree latitude, 22 degree north latitude, when you cross and move towards the south of India, then what you find, India is getting narrow, land narrow ho jata hai. Okay.
So this gives a unique structure to India. What a structure? Inverted triangular structure. So India's structure is inverted triangular structure. Now, the southernmost point, as I have said, if you consider Andaman and Nicobar Island, the southernmost point is the Pygmalion point, which is also called Indira Point, and it is located at 6 degree 45 minute north latitude. So if you consider the Andaman Nicobar Island, then the southernmost point is the Pygmalion or Indra point, which is located at 6 degree 45 minute north. It means India's border start with this point, this latitude, 6 degree 45 minute north. And when we consider the north-south extension of India, right from the Kanyakumari to the Jammu Kashmir Indira Col, then the distance is around 3214 kilometers. So the length from the Jammu Kashmir Indira Col, here the point is called Indira Col. So India is extended from Indira Col to the Kanyakumari. And when we consider the Andaman Nicobar, the India is extended till the Indira Point or Pygmalion Point. Indira Point, or it is also called Pygmalion Point. So from here, Indira Col to the Kanyakumari, the distance is 3214. And when you consider the distance from the Gujarat to the Arunachal Pradesh, it is 2933 kilometers. So it is the north-south and east-west extension or the width from Run of Kutch in Gujarat to the Arunachal Pradesh. These are some factual points which may help in the preliminary paper. Now when you look at the latitudinal extent, when you consider 8 degree 4 minute, and when you take in the under this Great Nicobar Island, the the Indira Point. So if you consider the latitudinal extent of India is about one third of the angular distance between the equator and the North Pole. So if you consider here, this is the equator and this is the North Pole, 90 degree, and this is the 0 degree. And India is located, as I have said, India is located from 6 degree 45 minute north, okay, to 37 degree 6 minute north. So when you look at this angular distance, okay, this angular distance, when we consider this angular distance of India, okay, it is occupied almost one third of the angular distance between equator to the pole. So India's angular distance is almost one third of the distance from equator to the pole. ये जो distance होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसका one third भारत ने occupy कर रखा है. And when you consider the longitudinal extent, that is from here to here, then it is of the 1/12 of the circumference of the to the earth. तो ये जो सर्कमफेरेंस है, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं. तो यहां से यहां तक का जो है, ये इस सर्कमफेरेंस का 1/12 पार्ट है. It shows how the vast India is. It occupies 0.57% of the entire land part of the globe. 2.4% land part, globe का पूरा 0.57% है. So India is one of the vast country, the seventh largest country area wise, as I have discussed with you people. So when you consider the longitudinal distance of India from Saurashtra in Gujarat to the Arunachal in the east, what you know that the earth is, when you look at this, earth is of 360 degree. And when you look at this earth 360 degree, the earth rotate on its axis, okay,
in every 24 hours. In every 24 hours. Okay. So when you look at the rotation 1 degree after every 4 minutes, and when you look at this longitudinal extent of India from here to here, as I have discussed, it is of 30 degree. So how much time it will take from here to here? It will take 30 into 4 is equal to 120 minutes, and that is 2 hours. So what is the distance when you have to consider the time gap between the Arunachal and the Jammu, this Gujarat? There is a 2 hours distance. It means the sun rises here 2 hours earlier than Gujarat. Earth is rotating from west to east, and the sun rises from the east. So when the sun is appear first in India, in Arunachal Pradesh, and there is a gap of 2 hours between the Arunachal and Gujarat. So when the people of Gujarat find the sun in the sky, the sun is quite high in the sky in Arunachal Pradesh. But what is the problem here? The problem that the India has considered its Indian Standard Time, which passes from the Nani of Allahabad and Mirzapur district of Uttar Pradesh, and that line is called Indian Standard Time. And this line is passing through 82 degree and half minute north, sorry, east. It is a longitudinal line, 82 and half, that is we called 82 degree 5 minute east. And this longitude is considered as Indian Standard Time, and all the wattage of India is fixed from here, all wattage. So the government has considered this line, this meridian, as Indian Standard Time, 82 and half. It passes through the Nani, which is opposite to the Allahabad at the bank of the river Ganga. And it also passes from the Mirzapur district of Uttar Pradesh. So when you consider this line as an Indian Standard Time, the India has fixed the time zone, okay, based on this meridian. And that's why what is the problem, that we have a single time, and the offices start from, say for example, if the 10 a.m. in the morning and work till the 6 p.m. or the 5 p.m. So this 10 a.m. is for the Arunachal Pradesh, but here the sun is rises far before than the Gujarat. The Gujaratis people also went to the office, okay, go to the office at 10 a.m. and the people of Arunachal Pradesh also. But वहाँ जब गुजरात में 10 बज रहे हैं, तो उसके काफ़ी पहले अरुणाचल में डे हो चुका है, बट उतना टाइम उनको वेट करना पड़ता है. द पीपल हैज़ टू वेट. गुजरात में जब इवनिंग होगी तो अरुणाचल में नाइट हो चुका रहेगा, 2 घंटे पहले वहां अंधेरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों को वेट करना है. सो द टाइम हैज वेस्टेड, and that's why the people are demanding for what? The more time zone. And it is a debatable issue. The government is now thinking over it, but still India have a single time zone. Okay, so this is the problem, that the people lost their time because of this complexity, because of this Indian Standard Time, which is right now working. So you have to remember this, what is the time gap between the Arunachal and the Saurashtras of Gujarat. Now when you look at the longest and shortest day, okay, so the difference between this longest and shortest day increases with the latitude. So the Kerala, as I have said, 45 minutes, while in Leh the 4 hours.
The question is why. You find out the question answer and tomorrow tell me ki why there is difference between the longest and shortest day between the Kerala and Leh. Can you able to tell me why there is a longest and shortest day increases with the latitude? Do you have any answers? Because of the length of the latitude. Is there length of the latitude varies from here to here? Latitude is this line. Latitudes are parallels, no? So is there length varies of latitude? Is there because of length of this latitude? सर लेंथ ऑफ लेंटिट्यूड ऑफ सर वो जितना सर ऊपर जाता है उतना सर छोटा होता जाता है और सर जो इंसुलेशन रहता है सर मतलब ये लैटिट्यूड छोटा होता चला जा रहा है. ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? हाँ बताओ, बता रहे थे, सोच के बताओ. बोलो, टेल मी. क्या हुआ? सर इंसुलेशन सर केरला की तरफ जल्दी पड़ेगा. केरला पर जल्दी पड़ेगा, मतलब सर उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा और ज्यादा देर तक रहेगा. ओके. और सर ले पे सर टाइम लेगा थोड़ा और सर जल्दी चला जाएगा. अच्छा. Which portion is close to equator? Kerala. Which region receives more insolation? Kerala. Means, as you know, in the tropics and in equatorial region, the sun is vertical and receives more. Okay. What? It receives more insolation. So that's why, as you know, the Kerala, which is very close, okay, receives more insolation close to the, it is close to the equator. While when you look at the Leh, where the Leh is located, now it is in the Ladakh, which is a union territory. Earlier it was in Jammu Kashmir when Jammu was for the state. So Leh is close to what latitude? The subtropical latitude. And that receives comparatively what? The oblique light, not the vertical one. And there, that's why there is a differences. So that's why there is a differences between the longest and the shortest day between the Kerala and Leh. Are you getting my point? So now what I have discussed, because so let's understand again 2 minutes revisions. And as I have said, the India is one of the vast land in the South Asia, because the Asia is now considered in different, okay, we divide the Asia for the sake of simplicity or study into different parts. When we consider Southeast Asia, the Southeast Asia considers the countries like Malaysia, Indonesia, Philippines, okay, and this Vietnam, Laos, Thailand, etc. Now, when we consider the Far East consider the Japan, okay,
the Korea. This, when we consider the East Asia consider the China, the Mongolia. Okay, the certain part of the Russia is considered in the Asia. Okay, and when you consider the West Asia, or the, it is also called Middle East, where the right now there was a clash, and still the clash is going on between Israel and Palestine, as you people know. So Jordan, Israel, Palestine, Syria, okay, the Turkey having certain part in Asia as well as in Europe. Okay, is Iran, Iraq, Bahrain, UAE, Kuwait, Yemen, Oman, Qatar. Okay, all these countries are the part of this. Then when we consider the Central Asia close to the Aral Sea and the Caspian Sea, the countries like the Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, okay, the Ukraine, which is now fighting the war with the Russia. Earlier they were the similar part, the part of the USSR. Okay, so these are considered as the Central Asia. So the geographer has divided Asia into different regions for the sake of simplicity of study, because the Asia is one of the vast and the largest continent of the world. And out of that, India is the part of South Asia. What considered under the South Asia? The country of Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, okay, and the Maldives. These are the part of the South Asia, and India is the part of South Asia, having 32 lakhs 87,263 square kilometer land area, seventh largest country of the world, 2.5% of the entire land of the earth occupied by India, and 0.57% of the land of the entire globe is occupied by it. What is the latitudinal extent? When you consider the mainland of India, Kanyakumari, located at 8 degree 4 minute, and Indra Call in the Jammu Kashmir, located at 37 degree 6 minute north. So India is completely lying in the northern hemisphere, that is not to the equator. Once you consider Andaman and Nicobar Island, in the Great Nicobar part, there is a Pygmalion Point and India Point, which is the southernmost point of India's, located at 6 degree 45 minute north. That is, Pygmalion Point is also in the northern hemisphere, not to the equator. So what you find, and what is the unique thing, is that the Tropic of Cancer, 23 degree and half minute north latitude, is passing from mid of the India, and it passes through the state of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, okay, Chhattisgarh, Jharkhand, okay, the Bengal, okay, and the Tripura. All these regions it passes through. What? The Tropic of Cancers. So the Tropic of Cancers passes through the mid of the India, and it crosses through the several, okay, state, and it divide the Indian climate into two type of climate. In the not to the Tropic of Cancer, the Indian climate is slight subtropical in nature, while in the south, the tropical in nature. And Indian climate is unique. Why? Because of landlocked nature of the Indian Ocean. Indian Ocean never meet to the Arctic Ocean. And the Indian climate is monsoonal type. So India receives mainly the summertime rainfall through the southwest monsoon. Okay. So India having the monsoonal climate, as I have said. Now, when you look at the distance from the Jammu Kashmir to the Kanyakumari, it is 3214 kilometer distance, and from the Gujarat, Saurashtra to Arunachal Pradesh, 2933 kilometer distance. And when you look at the from equator to the pole, if you consider the angular distance, India occupied one third of the angular distance from the equator to the North Pole. उसका वन थर्ड भारत के पास है. और अगर हम पूरा सरकमफेरेंस की बात करें अर्थ का, तो उसका 1/12 पार्ट इंडिया के पास है. अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने कहा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट,
और 68°7 ईस्ट टू 97.25 ईस्ट। अगर आप इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डिफरेंस देखेंगे तो 30 डिग्री का आता है। और मैंने कहा कि अगर इंडिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का दिखता है भारत। भारत कैसा दिखता है, बोला कि इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इंडिया का दिखता है। ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि इंडिया ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, so this is inverted triangular structure. So I had discussed all these features of India और मैंने बताया इंडियन ओशन का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए फैक्चुअल। Why this factual information is required? Because facts build the concept later on. When we learn the concepts later on, these facts helps us to decipher that concept. For India having 15,106.7 kilometer of land border running through 92 districts in 7 states and a coastline of, ये तो लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर जो डिफरेंट स्टेट्स से होकर गुजरता है। ठीक है, और इसमें कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 92 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द 17 स्टेट्स। नाउ व्हेन यू लुक एट, and there are also the union territory now, the Jammu Kashmir and Ladakh now become the union territory which share the land borders, okay, with China as well as the Pakistan and Afghanistan, so that we also consider. And India having coastline of 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर लैंड बॉर्डर वी हैव, सॉरी मैरीटाइम बॉर्डर, कोस्ट लाइन इसको कहते हैं। So India having the coastline from here Gujarat region, if you consider, to the this West Bengal, we have what, 7516.6 kilometer land, this maritime border we share, coastline, which touching 14 states and union territory. So if you consider and counted, there are 14 states as well as union territory which share the coastline with Indian Ocean. So this fact is important. This fact is important. Why? Because once you started writing about the maritime resources and all, you have to tell what states share the boundaries with the Indian Ocean directly. Now, if you look at, certain states are landlocked in nature, not share the boundary with the this coastline, और कोई इंटरनेशनल बॉर्डर से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे देश के अंदर, नहीं उनका कोस्ट से यानी समुद्र से उनका कोई रिश्ता नाता है, नहीं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, और नहीं उनका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर है। वो कौन से ऐसे स्टेट हैं? वो स्टेट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, तेलंगाना, हरियाणा। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्री क्वेश्चंस। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो वहां देख के तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, और इसका आंसर भी ढूंढ नहीं पाओगे अगर इसको याद नहीं करोगे या इस तरह से सोचोगे नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है, नहीं वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है, नहीं कोस्ट लाइन, तो ये राज्य है। और ये एग्जाम में अगर आ गया सामने तो वहां पर काउंट करके तुम्हें याद ही नहीं आएगा, क्योंकि मैप्स इतना बार देखने से ही चीजें याद होती हैं। ठीक है, नाउ एज आई हैव सेड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द लाइन दैट इज लैटिट्यूड 23.5 passes through the mid of the India and divide the country into two latitudinal halves, as I have said, about 15 degree from either end। चूंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 30 डिग्री का है, ये लाइन के 15 ऊपर 15 नीचे, यानी 30 डिग्री का डिफरेंसेस को ये 15-15 में डिवाइड करता है। और अगर हम देखेंगे, बट एरिया टू द नॉर्थ इज नियरली ट्वाइस एरिया ऑफ द साउथ, क्योंकि भारत का नदर्न पार्ट टैपर्ड है और भारत का सदर्न पार्ट वाइडर है। अगर आप देखेंगे ऐसा है क्या, सदर्न पार्ट इज टैपर एंड नदर्न इज वाइडर। और जैसा मैंने कहा 23.5 की लाइन यहाँ से ऐसे जाती है,
और मैंने आपको बताया था कि लगभग 22 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ जो है उससे अगर तुम आते हो साउथ में तो इंडिया जो है वो कैसा हो जाता है, टैपर हो जाता है, उसकी विड्थ कम हो जाती है, नॉर्थ में इसकी विड्थ ज्यादा होती है। तो 22 डिग्री को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, इसलिए हम सिंपली कह देते हैं कि कम से कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो याद करो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में इंडिया नैरो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में इंडिया वाइडर है। इतना तो याद कर सकते हैं। अगर ये 22 डिग्री एग्जैक्ट लैटिट्यूड हमें नहीं याद हो रहा है कि इसके किधर। फिर मैंने कहा कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 स्टेट से क्रॉस होता है और इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। वो है स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, द टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनसे भी क्रॉस होता है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। So these are the facts and these are the facts which become the question. मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम्स में, वो इस तरह से बनाए जाते हैं। और मैंने जैसे कहा कि अगर तुम्हें मैप देखने की आदत नहीं है या पता नहीं है कि मैप कैसे एक्सप्लोर करते हैं तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे नहीं एग्जाम में। इसको देखना पड़ता है बार बार। अब कल कोई स्टेट की बाउंड्री चेंज हो गई, कोई नया स्टेट कार्व्ड आउट हो गया, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ निकल गया तो आज 2 स्टेट काउंट कर रहे हो। पुराने जमाने में बच्चे जब पढ़ते थे प्रायर टू 2000 तो वो पढ़ते थे उसको केवल मध्य प्रदेश, तो वहाँ एक स्टेट कम था। जो झारखंड देख रहे हो आज पढ़ रहे हो वो पहले बिहार था। तो चेंज होती रहती है, ज्योग्राफी कीप चेंजिंग, ठीक है, तो फ्यूचर में वो चेंज हो सकता है। नाउ व्हाट इज द यूनिक टू इंडिया? In the north of India, when you look at, this is the Himalayan region and Trans-Himalayan belt. So this region, the north of India, is having the mighty towery mountains, and these mountains having the ice caps, glaciers, and these mountains are unique. Why? Because this mountain blocks what, the polar winds which are coming towards this region, and that's why they protect the India from uh, okay, to become a glaciated region or ice covered areas because it blocked the polar wind. So the chilling effect of the polar wind, what the Chinese feel, what the Mongolians feel, what the Russian feels, we never felt. And that's why because of this Himalaya, largely our climate is tropical. Largely our climate is tropical. Even in the winter, in Punjab plain, in night, the temperature reached to the freezing point. But in the daytime, the sky is clear, the sunlight is quite easily reached to the earth's surface and the temperature close to the tropical. And that's why the India is called as a tropical country, the tropical climate, despite India having, okay, the latitudinal extensions till 37 degree north. पर उसके बावजूद भी भारत में ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि पोलर विंड को ये रोक देता है हिमालयस, उधर से जो विंड आता है। तो पूरा सेंट्रल एशिया और चाइना में देखोगे बर्फ से ढका होता है, लेकिन भारत में ये रीजन नहीं ढका होता है बर्फ से। क्यों? क्योंकि पोलर विंड के रास्ते में ये बैरियर है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर एंड प्ले द हिमालय प्ले अ वेरी डिटरमाइनिंग रोल इन क्लाइमेट। अभी देखेंगे। उसी तरह से दिस हिमालय इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। अर्लियर इट इज ऑल्सो सेफगार्डेड इंडिया फ्रॉम द एक्सटर्नल इनकर्शन, क्योंकि इसको क्रॉस करके आना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ पासेज हैं अंदर आने के लिए। पासेज का मतलब क्या होता है? दर्रा, टनल, नेचुरल होते हैं वो। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, बट वो हिमालयन में है, इतने ऊंचे, जो कि विंटर में फ्रोजन होता है। जैसे यहाँ है काराकोरम पास। सो फ्रॉम दिस रीजन वन कैन इंटर हियर, बट इट्स वेरी टफ टू इंटर फ्रॉम दिस रीजन, ग्लेशिएटेड रीजन है। ओके, so there are several passes. Further I will discuss about the passes, important passes, when I will
discuss the map of India. But I'm telling you कि earlier when there was no air force, there was no plane, the Persians can only enter into any areas through the land or through the ships, then it's very tough to enter into India's from this way. So these are the natural barriers. Himalayas are the natural barriers. And beyond this Himalaya, when you look at this Karakoram ranges or this Jaskar ranges, okay, this Jaskar, Karakoram and Ladakh ranges, when you look at, okay, these are the part of trans-Himalayan. इसको कहते हैं ट्रांस हिमालयाज. ये हिमालयाज के नॉर्थ में है. हिमालय ये है यहाँ, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय और शिवालिक जो है वो यहाँ है. इसके बियॉन्ड भी माउंटेन्स हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस. And these are the natural barrier. These mountains play very significant role in strategic, as a strategic barrier or strategic importance है. And also the climatic importance. Apart from that cultural तो है ही, सोशियो इकोनॉमिकल है, तो अलग से पढ़ेंगे इसको. उसके बाद अगर देखेंगे, the south to this Himalayas is very fertile plain, which we called Indo-Gangetic plain and Brahmaputra plain. These are called the Great Plain of India, and these are the fertile plain. And when you look at the states which is located in this fertile plain, is the most densely populated states of India. Because these are the cradle of economy. This supports the Indian huge population because they produce, these are the basket of the grains. These fertile land are the basket of the grains. It supports the huge population of India's. But what is the unique feature? The west of this plain is desertic area. The western part of this plain are called Thar. Thar is a desert located in Rajasthan. Certain part of Thar is extended in Gujarat. Run of Kutch is the saline areas. Okay. So when you look at here, the land is saline, alkaline and desertic, which is non-fertile. But largely this part is fertile. And now to the south to this fertile land is the peninsular part. This part is called peninsula. And this peninsular part having uneven plateau. This part having uneven plateau region. And these uneven plateau are having the bounty of minerals. These are mineral rich zone as well as the forested land. So when you look at this, India having three physical divisions, three physiographic divisions, triple tectonic division हम इसे कहते हैं, north mountain, then plain, then peninsula or plateaus. So India having diversity of the minerals, Himalayas having also minerals, hard to extract, थोड़ा टफ है उसको निकालना. प्लेन के पास प्लेशर डिपॉजिट है और यहाँ मिनरल रिच एरियाज है. तो जितने भी आप देखते हो माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, उसमें से अगर हम देखेंगे मोर देन 85% माइनिंग्स जो होती हैं, ओके, वो पेनिनसुलर एरियाज में होती हैं. एंड दिस पेनिनसुला इज नाउ, when you look at this peninsular part is again surrounded by, ये peninsular part है, and this peninsular part is again surrounded by here what, the plain and mountains. अब यहाँ देखो, यहाँ फिर से एक माउंटेन है, इसको कहते हो वेस्टर्न घाट्स, इसको कहते हो ईस्टर्न घाट्स, और इस ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट और वेस्ट में फिर से प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न
कोस्टल प्लेन, तो यहां भी प्लेन है, कोस्टल प्लेन, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अगर ईस्ट में जाओगे तो यहाँ है वेस्टर्न घाट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री। हेयर ऑल्सो अ माउंटेन एक्सटेंडेड फ्रॉम महाराष्ट्र टू द केरलास and Tamil Nadu, and from here to here also the Eastern Ghats mountain are located. So this peninsular part is surrounded by the mountain here also and the coastal plain. So India having unique physical behavior. When you look at the northeastern parts which is connected with this chicken neck, a very narrow passage, land passage. Okay, here because this is Bangladesh, so the this northeast is connected through land from here only. This is called the chicken neck, and this area is entirely what, hilly and mountainous. There is a rugged topography and forested region. Rich in ethnicity because यहाँ tribal population है, unique ethnic characters है यहाँ पर. Okay, so this is the unique features of India. When you look at the India share the maritime as well as the land border with the different countries. What are the countries through which the India shares the borders, and which country shares the largest border with India? That is Bangladesh. Here I had mentioned the length of the border and the percentage. So Bangladesh, India share the border with the Bangladesh and that longest border. The second longest border it's share with the China, then Pakistan, then Nepal, then Myanmar, then Bhutan, and then Afghanistan. So you have to remember these facts because there is a separate topic also in the international relation as well as in geography, the geopolitics of Indian Ocean region. And when I will discuss this topic, तो समझ में भी आना चाहिए कि इंडियन ओशन रीजन में भारत के साथ और क्या कंट्री हैं और भारत किनके साथ बॉर्डर बना रहा है, और जिन देशों के साथ भारत के बॉर्डर हैं दे आर नेबर and the neighbors cannot change. And as I have said, India before or prior to independence having more than 47 lakhs square kilometer areas, but अभी 32 लाख है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, 32, 87, 263 स्क्वायर किलोमीटर रीजन है। पहले मोर देन 47 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, बट उसमें से डिवाइड होकर दो कंट्री बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान के पास मोर देन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया और बांग्लादेश के पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया आ गया। इस तरह से भारत के जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कम हो गए। दूसरी बात, इन देशों के साथ हमारे डिस्प्यूट्स भी होते हैं और इंडिया हैज डेवलप्ड सर्टेन पॉलिसीज टू मेक आवर रिलेशनशिप कंड्यूसिव, स्मूथ, एंड इंडिया कंसिडर वन ऑफ द पीसफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जब आज तक अगर आप वॉर हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया नेवर अटैक ऑन एनी कंट्रीज, अदर कंट्री स्टार्टेड इनकर्टिंग इनटू इंडिया। चाहे वो चाइना का इंटरफेरेंस हो तो चाइना इंटर किया था, भारत नहीं गया था इंटर करने, और इंडिया was not ready for the war during that period of time even. So they just ditch us. उन लोगों ने हमें धोखा दिया, धोखे से घुस गए और उन्होंने हमारा एक बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। इस एरिया में इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC. What it is called? Line of actual control, LAC. So if you take another color, so here this area is occupied by China. So here we had a, a classes continuously, अभी आप लोग देखते भी होंगे, सुनते होंगे, इसके लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार आपको देखने को मिलता है कि कई बार मिलिट्री और पैरामिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई देते हैं दो देशों के बीच में, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर एक ऐसा लाइन डेवलप किया हुआ है, यहाँ ऐसे फ्रंटियर बने हुए हैं जहाँ चाइना और इंडिया नहीं घुसते, दोनों एक लैंड मार्केट किया गया है। तो अभी इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे,
इन इंटरनेशनल रिलेशन आई विल डिस्कस। इसको कहते हैं, ये जो एरिया है इट इज LOC, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, and we share this border with Pakistan because this region is called POK, Pakistan occupied Kashmir. We called it Pakistan occupied Kashmir. Pakistan called it Azad Kashmir. So there are different nomenclature used by the different country. What we called, we consider Kashmir is our own land, और उन्होंने धोखे से घुसकर और फिर यूएन ने उसके ऊपर रोक लगा दी, अभी नेगोशिएशन चल रहा है, तो वो एरिया अभी उनके कंट्रोल में है। हम उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं ये मेरा पार्ट है। पर उसके हिस्ट्री अलग है, वो फिर से जो है वो ट्राइबल्स के भेस में पाकिस्तानी आर्मी घुसकर चुपके से और उसे कब्जा करने की कोशिश की। इंडियन ने उन्हें खदेड़ दिया था, लेकिन बाद में फिर यूएन में चले गए, तो वहां पर उसने इस बाउंड्री को अभी तक टेम्पररी, अभी ये बाउंड्री है जिसके ऊपर अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो अगर प्रेजेंटली हम देखेंगे इंडिया में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन अगर देखोगे, तो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट ये एरिया है जिसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल है, ठीक है। और इधर अब हिमाचल उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया है अभी, और जो ये एरिया है ये हमारे अभी कब्जे के अंदर नहीं है, ये मैंने डिस्कस किया। तो इसके कारण जो हम देखेंगे यहां पर, और ये पाकिस्तान के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है, तो चूंकि वी कंसीडर दिस पार्ट एज द पार्ट ऑफ इंडिया, and that's why we said that Afghanistan share the boundary with India also, क्योंकि अफगानिस्तान की बाउंड्री ये है। अब ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ये छोटा सा पार्ट भारत से मिलता है, यहाँ जो इंडिया से पार्ट मिलता है हम उसे कहते हैं डूरंड लाइन। क्या बोलते हैं उसको? बॉर्डर लाइन को डूरंड लाइन। So India and Afghanistan border line is called Durand line. India and Pakistan, this is called LAC, line, LOC, line of control, and this is the line of actual control. अब यहाँ देखो, this is the part we share with China. This is the eastern frontier of India, and this border is called McMahon line. McMahon line. So the India share the border with the China. This border line is called McMahon because the McMahon has designated this border. Okay. So this line is called McMahon. So this is the Durand, this is McMahon, this is LAC, this is LOC. So we have to understand these lines. ये भी border area याद करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि what is the name of the borders. Okay, so these are some disputed border areas. यहां पर भी क्या है कि the China claims अरुणाचल प्रदेश as their own region. ये कहता है अरुणाचल पूरा का पूरा मेरा है. So the India having dispute here in Arunachal Pradesh also, as well as here in Ladakh region also. India having disputes with China. We share a border here with Nepal. Nepal is here. So India share the border with this Nepal also. Now recently the Nepal has developed a map and shown certain Indian region in their own region. Where that region lies here at the Mahakali river. यहाँ एक river चलती है, उसका नाम है महाकाली या काली. So we consider Mahakali as a border, and as you know river shifted their course. तो हम इसको मानते हैं कि अच्छा इसके इधर ये है और इसके इधर इंडिया है.
अब मान लो कि थोड़ा सा ये शिफ्ट कर गया तो अब नेपाल कह रहा है कि नहीं ये वाला एरिया मेरा होगा, बट दिस इंडिया इज कंसिडरिंग दिस रिवर एज द बॉर्डर, and that's why there is a dispute again between Nepal and India along Mahakali River. The only country which share the boundary with India having no dispute is Bhutan. Bhutan is very friendly country. These Nepal and Bhutan are the buffer state. They are called buffer state. Why they are called buffer state? Because these are state lines between two huge state, India and China. And sometimes they are get trapped under the politics of this South Asia and this, और यू कैन से एशियन पॉलिटिक्स में ये फंस जाते हैं और कई बार उसका रिपरकशन इनको भुगतना पड़ता है. बिकॉज वॉट द इंडिया वांटेड चाइना एंड भूटान मस्ट फेवर अस. चाइना क्या चाहता है कि नेपाल एंड भूटान मस्ट फेवर मी, and that's why this Nepal and Bhutan always played under the hand of India and China. Sometimes India wanted a peaceful existence in that region, so try to develop a good relationship, but China with their might try to contain these powers, and that's why sometimes political unravel you find in the Nepal में लगातार political turmoil चल रहा है. अभी अभी the youngest okay बना है वहां पर, ये तो देख ही रहे हो चेंज हुआ है. जेन जी जनरेशन हैड चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो. ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस जियो पॉलिटिक्स. वी कॉल्ड इट जियो पॉलिटिक्स. नाउ वी हैड ऑल्सो डिस्प्यूट विद बांग्लादेश. हमारे साथ बांग्लादेश का भी कुछ डिस्प्यूट्स है, और अभी आप देख रहे हो कि वहां से आकर और फॉर्मर पीएम ने शरण ले रखा है. अभी वहां इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट्स आए हैं. उसके बाद अभी अभी वहाँ से मिनिस्टर्स आए. पहली बार भारत के साथ उन्होंने बात की, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ, और अपने डिस्प्यूट्स को दूर करना चाहते हैं. और वो चाहते हैं कि यहाँ से भेजा जाए इनको, शेख हसीना को. तो अभी उसके ऊपर बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है. इंडिया नेवर वांटेड कि नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन खराब हो, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज नेबर. मुझे पता है और आपको पता है नेबर्स नहीं बदल सकते, तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में ही भलाई है और उसकी कोशिश की जाती है. लेकिन उसकी कोशिश अपनी सॉवेरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके कभी नहीं की जाती है. तो डिप्लोमेसी में यह देखा जाता है कि हमारा कोई भी लॉस ना हो. इंडिया फर्स्ट अप्रोच है. इंडिया फर्स्ट अप्रोच का मतलब है कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन गुड्स, द बेनिफिट ऑफ आवर ओन पीपल. पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. अब यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम इनके साथ भी हैं. कुछ रिवर्स को लेकर डिस्प्यूट्स है, जैसे तिस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग पर डिस्प्यूट्स है. तिस्ता इज फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया एंड इंटर इनटू द बांग्लादेश. बांग्लादेश चूंकि लोअर रीजन में पड़ता है, तो भारत की कई नदियां जाकर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. गंगा, उसके ऊपर भी डिस्प्यूट्स है कुछ लेकर, क्योंकि बांग्लादेश का कहना है समर में इंडिया पानी रोक देता है और उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अफेक्ट होती है. रेनी सीजन में जब पानी बढ़ जाता है, डैम खोल देंगे तो बांग्लादेश का रीजन बह जाएगा, चूंकि वो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं. तो इसलिए बांग्लादेश के साथ हमारे रिवर के ऊपर भी कुछ डिस्प्यूट्स चलते हैं. और किन किन रिवरों के ऊपर डिस्प्यूट्स है, अल्टीमेटली आई विल डिस्कस विथ यू पीपल इन डिटेल इन इंटरनेशनल रिलेशन. मैं उसको आईआर में ही डिस्कस करूंगा. यहाँ मैं जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ. तो यहाँ इनके साथ भी हमारे कुछ प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के साथ. और बांग्लादेश वाज अर्लियर पार्ट ऑफ द ईस्ट. अब वो ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था. बाद में वो सेपरेट हुआ और एक इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉवरेन स्टेट बना. उसके बाद यहां देखो श्रीलंका है, और चलो बांग्लादेश के बाद हम म्यांमार देख लें. सो इफ यू लुक एट दिस म्यांमार और बर्मा, नाउ वी हैड अ गुड रिलेशन विथ म्यांमार.
Not best like Bhutan, but of course good relation. Earlier, slight a relation has been tilted when there was a army rulers who did the coup there and occupy the throne in Myanmar. वहाँ आर्मी ने शासन ऑक्यूपाई कर लिया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर, तो थोड़े डिस्प्यूट हुए थे. अभी प्रॉब्लम क्या है? दिस म्यांमार इज अगेन अ हिमालयन टेरिटरीज एंड द माउंटेन एंड हिली रीजन्स आर देयर. हिमालय यहाँ बेंड करता है ऐसे. अब क्या होता है कि ये पूरा हिली टेरेन है और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी अभी तुमने देखा था कि एक यूएस का सिटीजन यहाँ पकड़ा गया था जो कि यहाँ एक टेररिस्ट एक्टिविटी आर्म सप्लाई में पकड़ा गया और टेररिस्ट एक्टिविटीज में पकड़ा गया. नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी अभी तुमने सुना कि मणिपुर एरिया में वायलेंस चल रहा है पिछले 1-1.5 सालों से मीटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में. और अभी अभी पिछले वीक वहां पर एक गांव है जहां पर कि सीआरपीएफ कम इधर मिट्टी और कुकी कम्युनिटी के बीच का जो एरिया है वहां सीआरपीएफ और मिलिट्री ने अभी एक बफर जोन बना रखा है. वहां उन्होंने कैंपिंग कर रखी है कि दोनों में क्लैश ना हो. तो अभी मिट्टी कम्युनिटी के जो लोग रह रहे थे उस गांव में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 बच्चे मर गए. उसके बाद सीआरपीएफ की पूरी कैंप को 1200-1300 लोगों ने घेर लिया. दे एंटर इनटू द कैंप एंड ट्राई टू प्लंडर द कैंप. खास करके वो आर्म एंड एम्यूनेशन लूटना चाह रहे थे, जैसा कि वहां सीआरपीएफ के लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि वहां रहते रहते उन लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध हो गए थे. और वो बता रहे थे कि ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, बट वहां वो जो बम ब्लास्ट हुआ तो उससे नाराज हो गए लोग. लोगों ने कहा कि सीआरपीएफ के रहते हुए यहाँ ब्लास्ट हो गया, 2 बच्चे मारे गए. तो वो जो एंगर था, वो जो गुस्सा था, वो फ्रस्ट्रेशन था, उसमें वो लोगों ने अटैक कर दिया वहां के ऊपर. तो सीआरपीएफ को अल्टीमेटली लास्ट रिसोर्ट वहां गोली चलानी पड़ी और उसमें कुछ लोग इंजर्ड और कुछ लोग की डेथ हो गई. अभी वो लास्ट वीक की बात है. और इसके कारण फिर से वहां एक टेंस सिचुएशंस क्रिएट हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज के फ्रॉम वेयर द पीपल गेट आर्म्ड एंड एम्यूनेशन इन दैट रीजन. ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस पोरस बॉर्डर, वो म्यांमार के रास्ते. और इसमें लोगों का कहना है कि चाइना के थ्रू इनको जो है एथनिक टेररिस्ट ग्रुप को जो है वहां पर आर्म एंड एम्यूनेशन म्यांमार के रास्ते मिल रहा है और टेररिस्ट यहां से भागकर और म्यांमार में छुप जाते हैं. सो इंडिया इज ट्राइंग टू मेक अ गुड रिलेशन विथ म्यांमार टू बस्ट दिस टेररिस्ट कैंप. और पहले इंडिया ने ऐसा किया है और म्यांमार ने उसमें सपोर्ट किया है. भारत ने पहले भी वहां के टेररिस्ट कैंप उड़ाए हैं और उसमें म्यांमार ने इंडिया को सपोर्ट किया है. पर अभी फिर से ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि जिसमें कुछ टेररिस्ट कैंप म्यांमार में है जो वहां से इग्नाइट कर रहे हैं, इस टेंशंस को बढ़ा रहे हैं. और इसमें हिडन जो है मोटिव्स चाइना का है इंडिया में क्या करना, टेंशन क्रिएट्स करना. तो ये जो बॉर्डर्स हैं, दिट बॉर्डर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, not only as I have said for a strategic and security point of view, but also for other purposes. But these are the gateway to the eastern and southeastern regions. हम म्यांमार के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ईस्टर्न एशिया में जा सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते हैं. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जंक्शंस. तो हम उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Now, when we consider the maritime border, the Sri Lanka is very close neighbor to India, and we had a good relation with Sri Lanka, and India's time and again helped Sri Lanka in crisis situation. वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कू हो गया था और वहां से प्रेसिडेंट को भागना पड़ा था. एंड दैट ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया आल्सो सपोर्टेड श्रीलंका. सो वी हैड अ right now good relation with Sri Lanka. But sometimes the things has been changed when the government has been changed, because in the government of different states there are different mindset of the people, different ideologies, and sometimes also played by the Chinese hand. यहाँ पे चाइना ने एक पोर्ट डेवलप कर रखा है, हैबन टोटा पोर्ट, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी. उस पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं. उन्होंने म्यांमार में डेवलप कर रखा है, उन्होंने बांग्लादेश में डेवलप कर रखा है, उन्होंने यहाँ डेवलप कर रखा है, उन्होंने पाकिस्तान में
पोर्ट डेवलप कर रखा है। तो भारत को इनसर्किल करने की कोशिश की है किसने? चाइना ने, पोर्ट बनाकर, और इसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। पर्ल मतलब मोती, ये सारे मोतियों के दाने हैं, अगर इनको एक ऐसे मिला लेंगे तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। सो व्हाई द चाइना डेवलप द पोर्ट? उसने ये कहा कि हम इकोनॉमिक पर्पस से इन देश के भलाई के लिए कर रहे हैं, बट इसका पर्पस ये है कि कभी वॉर सिचुएशन हो तो अपनी नेवल फोर्स इसको यहाँ पे या डिप्लॉय करके और भारत को घेरने का प्रयास किया जाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव। ये भारत का कहना है, ये हम मानते हैं। So in geopolitics, always what we learn about कि how the countries contains each other। इसलिए डिप्लोमेसी में अगर हमारी थोड़ी भी चूक हो जाती है तो वो दूसरे देश उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए विजिलेंट होना पड़ता है और हर बार अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करनी पड़ती है कि अगर थोड़ा भी रिलेशन खराब हुआ तो हमारे एनिमी स्टेट्स वहां पर घुसकर और हमारे खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। Now come to the Maldives. Maldives is located here. Again a maritime border we share with the Maldives, close neighbor to India. And right now we have a good relation with Maldives, but earlier again the China entered into the Maldives, the Pakistan also having, because in the Maldives there is a larger population of Islamic people. Islamic religion were dominant. तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के इंटरफेरेंस के कारण कुछ एंटी इंडिया सेंटीमेंट डेवलप हुए थे, बट अभी ठीक है वहाँ पर, क्योंकि इंडिया हैज सपोर्टेड मालदीव्स डेवलपमेंट, और टूरिज्म को देखें तो इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स, और इनकी मेजर इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म से चलती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने तुम लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हमारे नेबर्स जो है, अगर हम इधर आ जाए तो ये देखो, ये मलेशिया और यहाँ इंडोनेशिया। सो इंडिया हैविंग आल्सो अ गुड रिलेशन विथ मलेशिया एंड इंडोनेशिया, and we had share a culture also, because the Indonesian cultures, बाली, सुमात्रा, जावा, लॉम्बॉक, ये जो आइलैंड है वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इंडियनाइज्ड कल्चर दिखाई देता है। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स आर लोकेटेड देयर। सो वी हैड शेयर्ड द कल्चरल ट्रेट्स विथ दीज कंट्रीज। और अगर आप चोला किंगडम के बारे में पढ़ोगे तो चोला हैविंग कंट्रोल ओवर दिस रीजन ऑल्सो, और उनके चोला का जो साम्राज्य था वो यहाँ तक फैला हुआ था, और उसके मैरीटाइम रिलेशन भी थे यहाँ के ऊपर। सो राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम वी हैड अ गुड रिलेशन विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एंड स्टिल इंडिया ट्राई टू मेंटेन, बिकॉज ये जो स्ट्रेट है, यहाँ से जो रास्ता है जाने का, ये जो मलेशिया देख रहे हो, ये तो म्यांमार का रीजन है। यहाँ जो मलेशिया है, मलाया पेनिनसुला कहते हैं इसको। पेनिनसुला इज द लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। So this peninsula where the Malaysia country is located, that peninsula name is Malaya Peninsula। और यहाँ मलाया पेनिनसुला और इंडोनेशिया के बीच से यहाँ वाटर बॉडीज है। यही वाटर बॉडीज के थ्रू हम अपनी शिप लेकर और जाते हैं इधर साउथ ईस्ट, इधर फार ईस्ट और ईस्ट एशिया की तरफ। और इस स्ट्रेट का नाम है, इस चोक पॉइंट और स्ट्रेट नैरो वाटर बॉडी का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो फर्दर आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन, अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में है, ये सब चोक पॉइंट हैं, ये सब नैरो वाटर बॉडीज हैं, बट दे आर वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल फॉर आवर स्ट्रैटेजिक। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, क्योंकि ये चोक पॉइंट बंद करके ईरान ने देखा ऑयल प्राइसेस कितनी बढ़ा दी हैं, एनर्जी का क्राइसिस आ गया है वर्ल्ड अक्रॉस। तो ये जो चोक पॉइंट है अगर बंद कर दिए जाए तो फिर ट्रेड तुरंत इम्पैक्ट हो जाता है, प्राइसेस तुरंत से बढ़ जाती हैं, क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। सो दिस डिस्पाइट दिस चोक पॉइंट इज ओके। अब ये जो एरिया है ये नैरो एरिया है, बट ये चोक पॉइंट बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडियन ओशन में हम देखेंगे कि कितने चोक पॉइंट्स हैं, कितने ऐसे स्ट्रेट हैं जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम स्टडी करेंगे इंडियन ओशन रीजन्स की। यहाँ मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया अभी इंडिया के बारे में। आई हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ओके विथ यू पीपल। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा देख लेते हैं।